Hello students, in this video we are going to solve question 2 of exercise 4.1 and this is part 3 of this chapter series. So let us solve the first question. The area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. Okay, so in this case, first of all, rectangular plot is given, so we know the area is length into breadth. Okay, and apart from that it is clearly mentioned the length of the plot, जो length है ना वो एक ज़्यादा है twice of its breadth. ठीक है, तो चलो हम assume कर लेते हैं पहले. So let the breadth be x meters and length is how much? Length of the plot is one more. Okay, one more than twice its breadth. Okay, or we can write like this, 2x plus 1. Fine. Now we know what is the area. Area equals to length into breadth. What is the length? 2x plus 1. What is the breadth? X. So it will be 2x square plus x, and we know the area, it is given here 528, so we'll write down the area as well, 528. Therefore now rearranging the terms, 2x square plus x minus 528 equals to 0. Thus the required quadratic equation is this one. Thus the required quadratic equation is 2x square plus x minus 528 equals to 0. This is your answer. Okay, now let us solve the next question. The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. Okay, we know consecutive positive integers कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 है तो उसका consecutive क्या होगा 2, अगर 3 है तो उसका consecutive क्या होगा 4. ओके, तो हम assume करते हैं let the two consecutive numbers be let the two consecutive numbers be, एक x है तो दूसरा क्या होगा, एक उससे ज़्यादा, x plus 1 होगा. ओके, नाउ इट इज़ गिवन दैट द प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन. ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हम लिख देते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या दिया हुआ है, 306. ओके, सो इट विल बी x into x plus 1 equals to 306. Therefore x square plus x equals to 306. Therefore x square plus x minus 306 equals to 0. Okay, so this is your answer, and we'll write down the final statement. Thus the required quadratic equation is
x square plus x minus 306 equals to 0. I hope you have understood this sum. Thank you. Hello students, let us solve question number 3. Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. Okay, so as you can see here, the product of their ages is 3 years from now will be 360. Product hai, that means multiplication. Okay, we need to assume Rohan's age as x. So मम्मी का एज क्या होगा x plus 26 क्योंकि वो उनसे बड़ी हैं. ओके, नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है 3 years from now, दैट मीन्स दिस इज फ्यूचर टेंस. ओके, तो हमें 3 years from now करना होगा, मीन्स +3 करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. So let the present age of Rohan be x years. Therefore, according to the condition, mother's age will be 26 more है. ठीक है, so x plus 26 होगा यहाँ पे, x plus 26 years. Okay, now we need to calculate after 3 years. After 3 years में क्या होगा, this is very important कि हम दोनों के एज में 3 years को ऐड करें एंड देन कंडीशन के अकॉर्डिंगली इक्वेशन बनाएं. सो आफ्टर 3 years रोहन का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, रोहन्स प्रेजेंट एज विल बी, मीन्स आफ्टर 3 years x plus 3 हो जाएगा. ठीक है, एंड मदर का एज क्या हो जाएगा, मदर्स एज विल बी x plus 26 है ऑलरेडी, आफ्टर 3 years +3 हो जाएगा. x plus 3 and x plus 29 is 360. Okay, so let us simplify this. This will be x square plus 29x plus 3x plus 87 equals to 360. Okay, therefore x square plus 32x, this will be plus 87 minus 360 equals to 0. Therefore x square 32x minus 273 equals to 0. So this is the required quadratic equation. Okay, I hope you have. Now let us solve the fourth question. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km or less, then it would have been 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train. Okay, इसमें क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है एंड 480 किलोमीटर ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया. अगर ट्रेन का स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम कर दिया जाए तो 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे इसी डिस्टेंस को कवर करने में. ठीक है, हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. इस तरह के सम्स को बहुत ही सिस्टमैटिकली सॉल्व करना होगा, अदरवाइज़ एक भी डेटा अगर मिस हो गया तो ये क्वेश्चन ठीक से बनेगा नहीं. सो फर्स्ट केस में हम डिसाइड करते हैं. इन द फर्स्ट केस क्या कंडीशन है, अकॉर्डिंगली हम इक्वेशंस लिखते हैं. सो इन द फर्स्ट केस यूनिफॉर्म स्पीड है, राइट. सो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, so let the speed of the train is u kilometer per hour. Okay, now distance covered is distance covered is 480 kilometer. Okay, now we know the formula for speed.
speed equals to distance upon time. Fine. So this implies what will be time? Time will be distance upon speed. Fine. So if we want to calculate the time, t equals to, what is the distance here? 480. Speed क्या होगा? Speed is given, that we have assumed that will be u. Okay. Now let us try to understand the second case. In the second case, okay, what happens now? If the speed had been 8 km per hour less, okay, that means speed कम हो चुका है. So speed, ओरिजिनल स्पीड u था और उसमें से भी 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया है. Okay, so overall this will be the equation. Now time will be distance upon speed. Distance remains the same, that is 480. Speed is now decreased, so u minus 8. So now according to the condition, let us form the equation. According to the condition, see the condition. Then it would have been 3 hours more to cover the same distance. ठीक है. So let us try to make a equation now. अभी जो फिलहाल जो करंट स्पीड है ना, दैट मीन्स जो टाइम हमें लगा 480 अपॉन u माइनस 8, अगर इस कंडीशन को देखें तो हमें 3 घंटा ज़्यादा लगेगा ओरिजिनल टाइम से. सो ओरिजिनल टाइम कितना था? 480 बाई यू था. ठीक है. अगर स्पीड, ट्रेन की स्पीड अगर कम हो जाती है तो ओरिजिनल टाइम से हमें 3 घंटे ज़्यादा वक्त लगेगा उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए. फाइन. इक्वेशन को मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ. 480 अपॉन u माइनस 8 इक्वल्स टू 480 अपॉन u प्लस 3. ओके. अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है. सो 480 अपॉन u माइनस 8, हम एलसीएम ले लेते हैं. सो इट विल बी 480 प्लस 3u. Now cross multiplication will happen. So 480u equals to u minus 8 multiplied by 480 plus 3u. Therefore 480u equals to 480u plus 3u square minus 3840 minus 24u. Okay, you know how to apply the distributive property over here. So if you see here, 480u and 480u will get cancel out. Okay, so it will be 3u square minus 24u minus 3840 equals to 0. Taking 3 common, we will get u square minus 8u minus 1280 equals to 0. Therefore u square minus 8u 1820 equals to 0. This is the required answer. U square minus 8u minus 1280. So we will highlight this. Write on the final statement. Thus
the required quadratic equation is u square minus 8u minus 128. Okay, I hope you have understood. Thank you.